ठीक है। ठीक है। सो आई एम संभव महापात्रा। आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर, उड़ीसा। पहले मैं निफ्ट शिलोंग में था। नाउ आई लेफ्ट, आई ड्रॉप्ड आउट एंड आई एम हियर इन एनआईडी भोपाल। इट्स माय सेकंड सेमेस्टर। यप। क्वेश्चंस पूछो, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। यप। Will I will ask the question. So, how was your campus life, and could you please brief us about NID? So, उनको भी पता चल जाएगा NID की कैंपस लाइफ कैसी होती है, क्या चीजें होती हैं. ओके। एनआईडी का कैंपस लाइफ ओवरऑल इज जस्ट 24 आवर्स, कुछ ना कुछ चलता रहता है। इवन 3 बजे 4 बजे कुछ ना कुछ, कोई ना कुछ कर रहा होता है। किसी रूम में जाओगे तो कोई कुछ काम कर रहा होगा, कोई और कुछ कर रहा होगा। Everything keeps on happening. You just have to stay awake and keep on going with whatever is happening. ऐसे design competitions होते हैं। There's lots of events happening. काम तो होता ही है हर दिन। We have assignments every day. Depending on the module, we get assignments and फिर end में submission करना होता है। Uh, a very nice system about NIDs we have, like if you know about Boha School of Design, I think पढ़ाया होगा आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया होगा। तो उधर का मॉड्यूल बेस्ड लर्निंग सिस्टम जो है, दैट इज हियर इम्प्लीमेंटेड इन एनआईडी। So there's not like multiple subjects that are being taught to you at one time. You just have one thing that you have to focus on completely. So that helps a lot to completely engross yourself in that work. उसी work में तुम पूरा घुस जाओगे। You go to the KMC library में जाओगे, you research about it, you come back to your room, you research, you listen, you hear, you talk to people. Entirely, I think overall it's a lot based on your will, तुम्हारा will to learn. Both, I'm sure people who are gonna end up in NID are gonna have that. So yes, that's about it about campus life. एंड एनआईडी Thank के you. अभी बहुत कम दिन बच्चे हैं, तो अभी सबसे ज्यादा किस में फोकस करें? uh, अभी आई थिंक आप लोग टेंशन ना मत लो। मेरे को एंड में बहुत टेंशन हुआ था फर्स्ट टाइम व्हेन आई गेव द एग्जाम। आई वाज प्रीटी श्योर दैट आई वुड गेट लाइक अ वेरी गुड रैंक एंड एवरीबडी हियर एज वेल। मुकेश सर, संजय सर, कृष्णा सर, सब बहुत लाइक एवरीबडी वाज रियली लाइक कि हाँ इसका हो जाएगा। बट देन आई ब्लंडर्ड बिकॉज आई वाज टू स्ट्रेस्ड ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। आई थिंक आराम से चिल मारो। अभी अभी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर डूइंग न्यूज लाइक क्वेश्चन पेपर अगर कर रहे हो वो करो। बट आई थिंक लास्ट वीक या फिर एटलीस्ट 3 days के बिफोर, डोंट डू एनीथिंग एट ऑल। दैट इज माई दैट इज माई सजेशन, डोंट डू एनीथिंग। I gave the second exam. I was traveling for 15 hours, and then I went to from Guwahati to कोलकाता। मैं शिलोंग से गुवाहाटी जाके कोलकाता जाके एग्जाम देके आया हूँ। यू डोंट नीड टू प्रिपेयर ज़्यादा बहुत कुछ अभी के लिए एटलीस्ट। आई गिव द एग्जाम कम्प्लीटली लाइक मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। आई वॉज इन निफ्ट एंड आई जस्ट रैंडमली डिसाइडेड कि ओके आई वांट टू चेंज माई लाइफ, आई विल गो समवेयर। तो या मेरा डिसिप्लिन, आई एम परस्यूइंग अभी के लिए कम्युनिकेशन, but I am open to whatever will happen in the future with the coming modules. I might jump to industrial or maybe even textile. See, when I like left NIFT, I had like thought कि okay मेरे को communication नहीं मिला है, I would suffer there a lot. But now that I'm here, I realize that everything has its own value if you get into the day. अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स बहुत सारे हैं। किसी का भी मूवी देखो और शशि का मूवी देखो, जो तुमको पसंद आए, just keep on watching, watch a lot of things, be inspired, watch a lot of compositions जैसा दिख पाओ तुम। yeah, enjoy। अभी हो गया, पढ़ाई हो गई, the hard part is done। we just exam देना है, क्या ही है एग्जाम। to make our answers different, be yourself, related to your own life। अगर तुमको वो सिचुएशन एक्चुअली लगती है कि वो हो रही है, तो उसको तुम कैसे सॉल्व करोगे। नॉट की द बेसिक जेनरिक आइडिया कि हाँ ऐसे ही सॉल्व होता है क्वेश्चन। यू नीड टू डू दैट। nor do you be nor do you have to be really good at drawing. Just have a clear idea about what you're doing,
मेक थंबनेल स्केचेस, छोटे छोटे स्केचेस बनाओ कि तुम्हारा आइडिया क्या है साइड पे, कि दैट impression is very important. Even here, coming here, everybody does little sketches before doing the final thing. Always focus on the process rather on than the like the final product, and they will view you in a much more positive light. और क्या questions? Oh, what you actually do in FC? Okay, so FC में there's like you're completely open to do a lot of things, but like generally FC is for like if you want to go into magazine design, UI UX, तुम actually कुछ भी कर सकते हो उसमें. It's very open, and there's this beauty about design education anywhere is तुम जो लो ले रहे हो और तुम जो फाइनली जिंदगी में करोगे, that will be extremely different. तो मैं वो I used to do that, and I think I've realized कि वो चीज is not that important. How is NIFT Shillong? Okay, there's a love and hate relationship between me and NIFT Shillong. It was definitely a nice place to be, but उधर के resources कम हैं, बहुत ज़्यादा कम है. But if you can figure it out there, I think you'll still do great. I have much like बहुत सारे seniors हैं मेरे जो NIFT Shillong से निकल के they're doing really good. So yeah, definitely. अभी तुमको जो opportunity मिल रही है उसको छोड़ो मत. Okay? अगर तुमको निफ्ट हो गया और एनआईडी नहीं हुआ, go to NIFT, do your thing there. There's this okay. There was this guy Mitul Jadeja who was my friend there. So he had given NID twice and he couldn't get into NID. Okay, so he's just started doing his own thing. He's just waiting for his degree and he's doing his own thing. The movies he makes, I tell you, are much better than what I see even in the graduation projects of our students in NID. He makes stop motion animation. So ये डिग्री ही है. काम करो, तुम काम पे फोकस करो, एवरीथिंग एल्स जस्ट वर्क्स आउट. इज इट ओके टू टेक ड्रॉप फॉर निफ्ट? बेटा मैं बोलूंगा डोंट टेक ड्रॉप. दोनों चीजें दो. प्राइवेट कॉलेज भी डाल ही दो, आई वुड से. पुट यूआईडी एज वेल. यूआईडी इज ओके. यूआईडी का एक दो दिक्कत है, बट स्टिल प्रीटी गुड. आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम यूआईडी हियर. तो आई वुड से ड्रॉप ड्रॉप बिल्कुल मत लो. जो मिल रहा है गो फॉर इट. एंड इफ यू फील लाइक इफ इट्स नॉट गुड अबाउट लाइक तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, डोंट गो देयर. फाइंड योर ओन मैच एंड वंस यू गो देयर तुमको पता चल जाएगा कि तुमको क्या चाहिए. अभी क्या व्हाट करंट अबाउट? अफेयर्स के लिए ज्यादा तैयार करें, करंट हाँ जी. अफेयर्स वगैरह? अभी क्या करंट अफेयर्स एंड मैथ्स उसके ऊपर फोकस करें? तो एनआईडी का करंट अफेयर्स इज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल. उसके ऊपर तुम फोकस करोगे तो तुम्हारा दूसरा सब खुश हो जाएगा. कुछ उस पे स्ट्रेस लेने का है ही नहीं. लास्ट ईयर क्या एग्जाम का पेपर वाज so simple, like the objective part of it. I had not read. I had just the luck कि मेरा हो गया. मैंने जीके कुछ नहीं पढ़ा था. तो उसके ऊपर स्ट्रेस मत लो. जितना पढ़ा है अभी तक, that is enough. That is much more than enough. Don't make a list going कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा, ये कैसे पढ़ूंगी, कब पढ़ूंगी. वो मैं करता था. It's just pointless. It's fine. तुमने जो किया है that is much more than enough. Most people haven't done that. Go give your exam, be present, सब हो जाएगा. Yep. What questions? How do we actually ace the exam and make sure we get in? ऐसा तो कुछ there is no shortcut to getting there. Even if you prepare, there might be chances कि तुम्हारा ना हो. Don't take that badly as well. ये exam वैसा ही है. So just go and give your exam. Be present. As I said, there's no proper way. Be yourself. I think they really view that as a very extreme positive कि तुम अपने जैसे हो. You're not trying to cover yourself कि हाँ ये मैं नहीं हूँ, but I'm trying to show कि okay I'm that person. I'm that designer that I want to be in future. don't don't do that. Be yourself, show your process. They will appreciate that. एंड मोमेंट पे लाइक अभी 10 डेज बाकी है, तो 10 डेज में लाइक क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं?
पेपर सॉल्व करो बच्चा, पेपर सॉल्व एनी एनआईडी का एग्जाम का पेपर दैट यू गेट। आई डोंट नो अगर संजय सर इज इन द लूप, बट आस्क हिम फॉर पेपर्स। आस्क सर, मुकेश सर को पूछो क्वेश्चन पेपर का। आई गेस हो रहा होगा, अभी से लाइक शुरू हो गया ना। मॉक दे रहे हैं हम। हाँ, मॉक दे रहे हो ना, तो मॉक एग्जाम देते रहो, गेट रिव्यूज, फीडबैक्स। आई यूज टू कॉल संजय सर एट, लाइक मैं 2 बजे रात को कॉल करता था, 3 बजे रात को कॉल करता था। तो सर लिटरली कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, सर सोने जा रहे हैं, मैं उठा देता था, सर उठाओ, उठो उठो उठो, फीडबैक दो, कैसा कैसा लग रहा है। अभी मेरे को रियलाइज हो रहा है दैट वाज जस्ट मी बीइंग टू पैरानॉइड, बट या, कुछ स्ट्रेस मत लो भाई। इतना तो मैं समझ गया, कुछ स्ट्रेस मत लो। Yep. और एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? Should या we आई हैव focus आल्सो on वन। product designing? हाँ जी। Should we focus on product designing? uh, अगर इफ यू थिंक दैट्स योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कि तुम्हारा अच्छा हो रहा है वो चीज, definitely go for it. Write the materials that you're going to be using for your product, like the product that you're making up. Yeah, and they really like if you write the materials, कि तुमने क्या material लिखा है, is it actually going to work with that material, so they're going to appreciate. What more is there? लास्ट मोमेंट टिप बचा भी बोला वही, स्ट्रेस मत लो, do your thing, chill out, watch art, watch lots of art, that will help you. मूवीज देखते रहो भाई। और अगर कुछ एक्चुअली जीके में पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर का पढ़ो, और कुछ मत पढ़ो अभी। म्यूजिक के बारे में पढ़ो, उस्ताद के बारे में पढ़ो। what else can you read? You can read about traditional paintings of India, few pioneers of that. So yeah, you don't need to अभी भी I would say दो कि जीके पे स्ट्रेस ज्यादा मत लो। Okay. But the basic things that NID pays the most attention to, प्रोसेस आपका, आप केयर करते हो आपके प्रोसेस के बारे में, आपको इन एंड आउट सब प्रोसेस प्रॉपरली पता है। थंबनेल स्केचेस बना रहे हो आप, स्केचिंग आपने होपफुली इम्प्रूव की होगी तो वो भी दिखेगा। मटेरियल लिखोगे, अगर प्रोडक्ट का क्वेश्चन है तो मटेरियल लिख रहे हो। अगर नॉर्मल कुछ ड्राइंग कर रहे हो तो उसमें स्टोरी डाल रहे हो, तो दे विल अप्रिशिएट दैट। या और एक था कि अगर एग्जाम हॉल में लाइक हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन में हमें आइडियाज नहीं आ रहे तो मतलब क्या करे, मतलब लाइक जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो बना के आ जाए या फिर कुछ और। आपको अगर आइडियाज नहीं आ रहे हैं तो अब अच्छा अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग दिखाओ, कि आपने सोचा क्या। माइंड मैपिंग सिखाई होगी सर ने, किसी ने तो सिखाई होगी माइंड मैपिंग कैसे करते हैं। या तो माइंड मैप बनाओ, ठीक है। माइंड मैप बनाओ, उसमें से कुछ पिक करो एंड उसमें से बनाओ। इवन इफ द एंड प्रोडक्ट डजंट इवन वर्क, वो माइंड मैप आपने बनाया ना, दैट वुड गिव यू अ ह्यूज एज ओवर अदर पीपल। ओके। क्विक टिप फॉर मेकिंग कॉमिक स्ट्रिप्स। कॉमिक स्ट्रिप्स का comic strip का just break down your frame into a few parts and try to make the movement अच्छे से। एंड ज़्यादा डायलॉग पे फोकस मत करना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे स्क्वायर्स आते हैं, लाइक द फ्रेम्स आर वेरी स्मॉल। आप जो प्रैक्टिस करते हो जिस शीट पे, एंड देन यू फाइनली गो एग्जाम देने के लिए, वो फ्रेम बहुत छोटा आता है। तो थिंक लाइक दैट, कि ऐसा चीज ड्रॉ करो दैट वुड फिट इन सच अ स्मॉल स्क्वायर। Which would you which should we pay most attention to? Products, posters, logos, storyboards, comics? आप किस में अच्छे हो, फोकस ऑन दैट। वो चीज आप सही से करो, द अदर थिंग्स विल टेक देयर प्लेस एज वेल। जो एनआईटी के एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए? ओके, यू डोंट फॉलो हिंदी, आई एम सो सॉरी, आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश फ्रॉम नाउ ऑन। क्वेश्चन,
I think you should give at least 10 minutes to think it out. ओवरऑल आप स्ट्रेस में जब होते हो 10 मिनट आप यू डोंट स्पेंड मोस्टली, बट वो 10 मिनट्स आप स्पेंड करके उसका प्रोसेस दिखा के 10 मिनट में आपने सोचा क्या है. इफ यू शो दैट यू what you're thinking for those 10 minutes, that matters more than the amount of work that you're putting into the final thing. um, Spend 10 minutes figuring out what you're gonna do, and spend the rest like 25 to 30 minutes depending on the complexity of the question doing the actual thing. तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं. आई एम सेइंग लाइक एक क्वेश्चन एज इन लाइक वन in the exam I gave last time to get here, there were 3 questions and each question के अंदर सब questions थे. I'm saying कि सब question के लिए spend at least like max 30 minutes. उससे ज़्यादा spend मत करो, not worth it. You're not making a masterpiece. It's an exam. They need to see your process. Okay. Design, but is still inspired. Yes, it is inspired by Megumi Achira. I have PCM in 12th, and my practicals are coming at almost the same time of the exam, which is making me confused. How am I supposed to focus on the exam without stressing about my practicals and boards? खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि आपको क्या करना है. इफ यू स्टिल नॉट श्योर कि आपको नीट देना है, आपको एनआईडी जाना है, वो तो आप फिगर आउट कर लोगी. डेफिनेटली मेरे को रियलाइज हो गया था. आई न्यू 2 years बिफोर कमिंग टू एनआईडी दैट आई एम गोइंग टू एनआईडी फॉर श्योर. I won't be able to be going anywhere else. But if you're still in the process, try to थोड़ा थोड़ा मैनेज. ये टाइम मैनेजमेंट तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा बच्चा. आई हैड कम्प्लीटली लाइक मैंने स्कूल का काम पूरा साइड में रख दिया था. 1 second. या तो मैंने स्कूल का काम पूरा साइड में रख दिया था. आई थिंक आई प्रिपेयर्ड फॉर बोर्ड्स इन लाइक 2 weeks. आई गेव द एग्जाम. तो वो तो कैसे होके हो गया, मैं पास हो गया. एनआईटी का कुछ क्राइटेरिया नहीं है बाय द वे मार्क्स का. द टॉप स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग हियर हैव लाइक 50% इन their 12th. तो 12th का अभी स्ट्रेस मत लो. यू आर गोना एंटर अ completely different space of work. If you feel like you still need to do good on that end, you really have to manage your time really well. Attend classes, do your own work, make time for yourself, give yourself extra time to work on things. बहुत सारे क्वेश्चन करो. स्कूल अगर जा रहे हो तो स्कूल में जाके मैं दिस इज समथिंग आई यूज्ड टू डू. मैं स्कूल जाके सो जाता था. आई वुड नॉट स्लीप द एंटायर नाइट. आई वुड eat breakfast, get ready, and I would get ready to sleep from the bus. I would sleep in the bus. I would go sleep the first half of the like पूरा school का. And मेरे जो teachers थे, they already knew that I was going somewhere, so they didn't question me much. But if you don't have that like इतने अच्छे अगर टीचर्स नहीं है आपके पास, you have to still think of other ideas to how to किधर आप क्या चीज शिफ्ट कर सकते हो. अभी भी हम ब्रेकफास्ट इधर आके इवन इन निफ्ट वी यूज टू स्किप ब्रेकफास्ट क्योंकि हम पूरा रात काम करते थे एंड देन वी यूज टू जंप सीधा क्लास भाग रहे हैं. तो ये तो आपको खुद से करना पड़ेगा. अभी तो हाउ मेनी आवर्स यू यूज टू स्टडी, कितना घंटा पढ़ा, कितना किया, वो दैट इज नथिंग. तुम्हारा आइडियाज, तुम्हारी क्रिएटिविटी विल बी शोन बाय हाउ मच तुम्हारा like how much, what do you say, how much you can see the art around you, how much you can see, how much you can perceive, how much perceive. तुम एक चीज की कॉम्प्लेक्सिटी को कितना समझ पा रहे हो. एक वायर अगर बनी है तो वायर वैसे क्यों बनी है. ओके. या व्हाट वाज आई सेइंग. तो यू रियली हैव टू बेसिकली मैनेज योर टाइम. और क्या क्वेश्चन पूछा था आपने. व्हाट वाज योर स्टडी रूटीन. ओके.
not sleeping the entire night and I would just go कि हाँ जो होगा देखा जाएगा. But I would usually wake up in between for the lectures and the beach ka time. I used to sleep. Then I would go back home, get ready for classes. And then class khatam hote I would work on my own stuff. I would have at least 2 3 like questions prepared for myself. I would write these questions myself, or I would ask Sanjay sir to write them for me, and then I would answer those questions with a timer. Timer के साथ करो questions. Don't work without a time limit. That does not work. Time limit के साथ काम करो. I used to work with a timer. As soon as the exam was over, मैं पूरा exam time रखता था. I used to have like a proper exam. After exam was over, I would take pictures and then I would send it to him. I would evaluate myself कि मैं what and उसको compare करता था मैं कि okay क्या मैं खुद की गलतियां देख पा रहा हूँ and क्या वो चीजें के लिए मेरे पास time है enough कि मैं उसको improve कर पाऊँ. Does perspective matter a lot? Okay. Perspective definitely matters कि तुमको space समझ में आ रहा है या नहीं, space and form your understanding या नहीं, वो तो देखेंगे तुम्हारा. I'm pretty sure they will definitely check that. So if you can get it better in a bit of time, go for it. But I wouldn't say focus way too much on it. Focus on, I think अभी तक तो बहुत सारे लाइव स्केचेस आप कर चुके होगे. अगर नहीं किया है, कुछ दिन बाकी हैं, ड्राइंग बहुत जल्दी इंप्रूव करनी है, लाइव स्केचेस बनाओ. दिन के 10 3 4 दिन करो and your drawing will be much better. Your level of observation will be much better. Draw your room. ठीक है, आपका आपका खुद का रूम या फिर खुद का स्पेस जो है उसको पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करो. तीनों पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करो. ड्रॉ इट खुद से पहले, while looking at it, while observing it, then keep that away, take a break, go around, do whatever, come back and draw it again from your memory. Even if you just do this exercise, your level of observation and your memory drawing will improve क्योंकि आपके पास रेफरेंस नहीं होगा उस जगह पे. And if you need reference, try to imagine things in that space. तो एग्जाम हॉल है ना, अगर कुछ नहीं हो रहा है आपका ड्राइंग तो एग्जाम हॉल को ही आप ड्रॉ कर लो थोड़ा चेंज करके. if you're able to visualize कि वो चीज कैसे दिखेगी, that that would uh, that would work as well. Use everything at hand that you have. अपना ब्रेन को खटाओ उधर एग्जाम हॉल के अंदर कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं विदाउट any reference, without anything at my hand. मेरे पास कुछ है नहीं. I have just my pencil and this paper. क्या कर सकता हूँ? What was your question when you gave exam? Blunder किया था. That was a perspective question. It was a very simple question. I don't know why I did it. But rat का perspective view on a room. That was like they gave us a picture of a rat दिखा रहा है and there's like a old man entering a room. So that was the basic question, and we were supposed to draw it in 3 point, but I don't know what I thought, but I drew it in 1 point perspective from a very low angle. So they did not like that. But definitely, yep. Definitely जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लोगे. अभी तो मेरे को आई हैव ट्रस्ट ऑन इग्नाइट कि आपको इतना तो पढ़ा ही होगा. Any other questions, guys? You can ask me. कोई दिक्कत नहीं है. आई एम सेम एज एज यू. मैं कुछ बुढ़ा आदमी नहीं हूँ कि मेरे को आप टेक्स्ट कर रहे हो. 20 साल का हूँ मैं. हाउ टू इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट वो तो अभी तक हम फिगर आउट कर रहे हैं. जूरी के रात में हम काम करते हैं जब, तब वो अब ये फिगर आउट करने का ट्राई करते हैं. इट्स जस्ट ट्रायल एंड एरर गाइस. तुम कैसे किस चीज को ऐड करो, किस चीज को निकाल रहे हो अपने रूटीन से, दैट इज I do ऑल यू have कैन. one question, हाँ Sambhav. जी, हाँ जी, हाँ जी. Basically, I want to know, like, once we got panic,
or get demotivated. So how do we go overcome that and can still improve in that? Like, are you getting my point? क्या एग्जाम हॉल में बोल रहे हो आप? हाँ, right. एग्जाम हॉल में अगर आपका ये हो रहा है तो आई वुड से ज्यादा उस पे जो हो गया अभी हो गया उधर ही छोड़ दो। आप अगर उसी में अटक गए तो आपका पूरा एग्जाम ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, थिंक अबाउट व्हाट यू कैन डू एंड उस क्वेश्चन को पूरा एंड तक छोड़ दो। आई वुड से अदर पीपल माइट से डिफरेंट थिंग्स, बट मेरा क्या हुआ, आई मेड दैट मिस्टेक एंड देन आई वाज ट्राइंग टू फिक्स द प्रॉब्लम and that took way too much time than necessary, so I couldn't focus on the other questions at hand. So I would say leave that question right there. You have done it. Show the process. अगर कुछ हो पा रहा है end में thumbnail कर दो कि how you would have done it. Okay, thumbnail your different views of that room. अगर मैंने मेरा room का question अगर है जैसा, तो मैंने एक view draw किया है। what I could have done to fix it was I would have drawn few views of that room कि 3 point में कैसे दिख रहा है, 5 point में कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। तो तुम अपना प्रोसेस दिखा दो, जिधर काम सही से नहीं हो रहा प्रोसेस दिखा दो। While in the preparing phase, what should be the approach then? प्रिपरेशन के फेज में वो गलती हो रही है, वो शीट को साइड में रखो और एक बनाओ, बनाते जाओ, वही है। प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। उससे ज्यादा आपको कुछ करने की, और ऑब्जर्व करो। ऐसा ब्लाइंड प्रैक्टिस भी नहीं करना है कि हाँ जस्ट कर रहे हैं गधे की तरह। अब डिजाइनर्स बनने वाले हो तो एनालाइज व्हाट मिस्टेक यू आर मेकिंग, talk to people on how to fix it and fix that according to you. What do you think the invigilator looks in our design exam? Under 2 वो तो I would say that's the only thing मेरे को जो गलती हुई। हाँ, तो आप जो बोल रहे हो कि इन्विजिलेटर क्या देखता है, इन्विजिलेटर का क्या देखता है वो तो आज तक किसी को नहीं पता चला है एनआईडी का। दैट प्रोसेस हैज बीन वेरी सीक्रेटिव, सो वी डोंट एक्चुअली नो कि क्या व्हाट दे लुक फॉर, बट व्हाट दे लुक फॉर आई गेस इज बेसिकली योर पर्सनालिटी इन योर वर्क, your personality, your lines. Is there a will to draw, to will to do something while doing the design? Do you actually want to solve problems, or are you just someone who's visual and who's gonna just make random things? Process दिखाओ, तुम्हारा thought process दिखाओ. That is what matters. Is shading important? एग्जाम में शेडिंग ज्यादा important नहीं है। अगर आपकी शेडिंग बहुत अच्छी है तो दिखा दो, अगर नहीं है दिखाने की जरूरत नहीं है। लाइन ड्राइंग करो, सिंपल आइडियाज दिखाओ, एंड दैट्स ओके। What is the probability of Any NID? last tip that you want to give to our student, because we are running out of time, so हाँ जी, हाँ we जी, can. हाँ जी, मेरे को I भी mean, जाना है। any last question, guys? Can being really good at GAT questions and not so good at drawing get us a good rank in NID? ऐसा तो मैं बोलूंगा नहीं। दे विल डेफिनेटली सी दोनों चीजें, बट आपको अगर लग रहा है कि यू विल हैव द GAT questions in your hand, that is not an infinity gauntlet that you think it is. वो बहुत रैंडम क्वेश्चंस देते हैं एंड यू कैन नेवर गेस। इवन निफ्ट में भी उस साल बहुत ही ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस आए थे, तो डोंट बेस एवरीथिंग ऑन योर गैट। ये चीज भी बहुत लोग ने की थी लास्ट टाइम एंड इवन बिफोर दैट टाइम। इन विच एनआईडी एम आई? आई एम इन एनआईडी मध्य प्रदेश राइट नाउ। I had a few options, but I chose Madhya Pradesh because I couldn't get Ahmedabad. But yes, Madhya Pradesh is really good, and I am hoping that I will see some of you during your second exam mains. संभव जी के लिए तुमने कैसा प्रिपेयर किया? बाय द वे मुकेश सर अभी भी वो सर आते हैं, Yes. नवीन सर? हाँ, नवीन सर आते हैं हाँ, नवीन सर ने लिस्ट तो दी होगी आई थिंक सबको कि क्या क्या प्रिपेयर करना है, राइट? I want to see, like, I want to know your approach about that. मेरा अप्रोच आई वुड से डिजाइन सर्कल्स में इंक्लूडेड रहो। इंडिया के डिजाइन सर्कल्स, इंडिया के रेडिट सर्कल्स में डिजाइन के उसमें रहो, चीजों में इंक्लूडेड रहो, बी इन द डिजाइन कम्युनिटी एंड focus a lot on music and art of India. Dance, particular dance, fusion dance, उसका क्या नया developments है? Is that artwork dying, or is it a art form that's like gonna
be the next big thing. So it's a lot about being present in your reality and looking for those clues about design. And if you can follow a few things, Yanko design, sorry. And there's like a few design forums as well that you can check out. What is the probability of NID asking 4 points and 5 points? ऐसा ऐसा probability तो कुछ नहीं है. आप अगर अच्छे से execute करेंगे then definitely gonna award you good marks. 4 point and 5 point if you can show, बहुत अच्छी बात है. बट उसको नहीं हो पा रहा है सोच के वो स्ट्रेस में आके और गलती मत कर लेना. और किसी को कुछ क्वेश्चन? because I also have to leave. If we are not able to draw our idea perfectly, can we convey our idea in the form of write up? Yes, definitely. अगर आप अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तो राइट अप अच्छे से लिखो with not a lot of words. Show that you are articulated in your words. Few words but show कि तुमने क्या किया है अच्छे से सिंपल वे में. एंड अगर भी थंबनेल बना रहे हो छोटा सा तो हाउ टू स्नीक योर राइटअप इज, अगर राइटअप ज्यादा बड़ा हो रहा है तो थंबनेल के पास छोटा सा कुछ लिख दो. राइटअप ज्यादा बड़ा नहीं लगेगा, इट विल स्टिल बी लाइक बाइट साइज पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे कैन कंज्यूम एंड दे विल फील लाइक saw a lot of visuals and then they read. हाँ जी. Sambhav, last thing that I want to ask from the student side कि अभी 10 to 15 days are left for the exam. So इस 10 to 15 days में इनको क्या focus करनी है? Once more, please repeat this thing, and we will wind up the session. ठीक है. ओवरऑल लाइंस का प्रैक्टिस आई गेस किया होगा. लाइन प्रैक्टिस करो. बेसिक चीजें, अभी बेसिक चीजों पे ही फोकस करो. ज्यादा ऐसा क्वेश्चन में घुस के कुछ प्रॉब्लम आएगी आपको. बस लाइन प्रैक्टिस करो. लास्ट मिनट आपको अगर कुछ जीके करना है, गिव इट मैक्स 2 days. आफ्टर द लाइक द लास्ट वीक जो होता है उसमें जीके मत पढ़ना. जैसे हो गए, अगर पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 2 दिन तो रखना अपने लिए कि कुछ नहीं कर रहे हो उस टाइम पे. कुछ भी मत करना वो लास्ट 2 days. दैट इज माई एडवाइस. अगर कुछ करना है, लाइन ड्राइंग, दैट्स ऑल. कीप ऑन डूइंग लाइन ड्राइंग. बहुत सारे लाइंस बनाओ, कर्व्स बनाओ, सर्कल्स बनाओ. लाइन ड्राइंग करो करो और बस. जीके बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं अभी. थोड़ा सा सोचो, एग्जाम पेपर दो कुछ कुछ, संजय सर से फीडबैक लो एंड या वो गुड टू गो. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट गाइस. Okay. Thank you, Sambhav. Thank you so much. And thank you, student, for joining the session. If you have any other doubt, you can just text to your mentors. They will revert back on your question. ऑलराइट, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट. अच्छे से करना एग्जाम. आई होप टू सी यू ऑल. कोई तो आएगा एटलीस्ट. ओके. एंड इफ यू डू सी मी इन Thank you कैंपस, so much. हाय बोल देना. ऑलराइट, चलो. ऑलराइट, बाय बाय. To see our videos till the end, and if you would like to gain more knowledge, tips and tricks for the NID or any design entrance exam, please subscribe to my YouTube channel and get connected to us. Thank you.